कैंसर जो कि बहुत तेज होते हैं और बुखार, खून की कमी, प्लेटलेट की कमी के साथ प्रेजेंट करते हैं। सो कॉमन सिम्टम्स है कि कमजोरी आना, कहीं से नाक से ब्लीडिंग होना, दांतों से ब्लीडिंग होना, स्किन में नीला पड़ जाना, बुखार आना, बुखार कंट्रोल नहीं होना, कमजोरी आना, वजन कम होना, कुछ गांठें फील होना, ये सारे ब्लड कैंसर के सिम्टम हैं। ब्लड कैंसर बहुत अलग-अलग प्रकार के होते हैं। उसमें इलाज में पहले कीमोथेरेपी होता है, उसके बाद अगर कीमोथेरेपी से कंट्रोल नहीं होता तो कुछ कैंसर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिसमें स्टेम सेल्स, हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं तो हमेशा लोग इतना घबरा जाते हैं कि उनका बोन मैरो या कमर की हड्डी से खून लिया जाएगा, तो वो बहुत ही मिसनॉर्मल या फिर गलत बोला जाता है। उसको स्टेम सेल ट्रांसप्लांट बोलना फ़ायदेमंद है। स्टेम सेल मतलब जो सेल्स या अपन आसान भाषा में समझे कि जो बीज होते हैं, जैसे खेती में हम बीज डालते हैं, उससे नया पेड़ बनता है, नया फसल लगती है, उसी तरीके से स्टेम सेल्स होते हैं, जो कि नया ब्लड बनाने में मदद करते हैं। तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एक प्रोसीजर है, जिससे पेशेंट जिसको कैंसर है, उसका हम खून बदल सकते हैं, जिस कारण उसका बीमारी को खत्म किया जा सकता है। Thank you so much, Dr. Sapni. Now, I would like to welcome Mr. Mohammad Asif Hassan, head donor requirement, DKMS Foundation India, on stage to talk about DKMS and the impactful work being done by the NGO across India. I will take a minute. I need to open the laptop. Okay. Hello everyone, good morning. नमस्ते, मेरा नाम आसिफ है और we will talk about DKMS Foundation. I will tell you what we do, who we are. Yeah. So DKMS Foundation, it's a non-for-profit organization. You can say it's an NGO, and we work on fighting against blood cancer and other blood disorders such as thalassemia or aplastic anemia. And the purpose is totally to provide second chance of life to the patients who are affected by any blood-related disease across India. Yeah. And we also work on creating awareness about stem cell, about blood cancer, about the stem cell transplantation process, and we do also registration of potential blood cell stem donors. It means we try to find good, healthy people who can support our cause and who can do the donation of stem cells when the time comes, when we find a match, when the person becomes a match. Yeah. So we started in 1991. So what happened in 1991 in Germany? You can see on the screen there is a picture of this lady, Matilda. Yeah. So she was affected by this blood-related disease, and then her husband, Peter Haas, he was trying to find a donor for her, but unfortunately, he was not able to find a suitable donor. Yeah, and then she passed away. But she also said that she said this to her husband that do not stop fighting until every patient has a matching donor and a potential second chance at life. Yeah. And then he started this organization, and right now DKMS works across 7 countries globally, and we are the one of the largest registry in world. Yeah. In India, we are
working across India, I will say. Our head office is in Bangalore. So far, we have registered more than 2 lakh potential donors, and still we are registering more. Yeah. So when we do the registration, sometimes we do general registrations where we increase the database, and once we found a match, we also, go to the person. Also, sometimes if there is a patient, we also try to find a match for that particular person by conducting specific patient-related trials. Yeah. So far, we have also saved more than 160 plus lives in India. Yeah. Now, let's talk about Indian context. Yeah. Why we need this organization. So every year, more than 108,000 people in India are diagnosed with blood cancer. So you see, this is a big number. Every year, more than 1 lakh people are diagnosed with the blood cancer. And currently, we have around 2,70,000 people in India. So this is a 2020 data. Of course, this has increased by now. We know we're in 2025. So this was 5 years old data. Yeah. And every year, nearly 70,000 people in India die because of blood cancer. Blood cancer accounts for 8% of all new cases of cancer diagnosed in India. Yeah. And blood stem cell transplantation is often the last treatment option. So it's like the final option we have. When everything else doesn't work, then only we go for stem cell transplantation. And only 0.09% of the Indian population is registered as a blood stem cell donor. So you can see it's not even 1%. Okay, it's less than 1%. So it means there is a need of registering more people as a stem cell donor. While some patients they find a match within their family, the rest must rely on unrelated donors from global registries. So getting a match within a family is very low. Only I think 30% people they get a match within family, and for the remaining, we need to find a match outside of their family. Yeah. And this is a big challenge for us. The success of a blood stem cell transplantation depends on finding a perfect HLA matching donor. So finding a HLA matching donor is really a big challenge. Yeah. And there are millions of types of HLA. It's not only one or two. Indian HLA is different from the rest of world. It's because of different ethnicity and different genetics here in India. And chances of finding a match within the family is only 30%, and the rest 70% look for unrelated donors. It means this 70% will be not from the family. It can be somewhere outside in the world, in society, in community, and we are trying to reach them. Why it is so difficult to find a donor in India? So you can see here different reasons. India is home to over 3,000 ethnic groups. Yeah, that's huge, making it one of the most genetically diverse nations in the world. The diversity makes matching stem cell donors extremely complex because it's a different ethnicity. So finding a donor is very challenging in India. Yeah. So all these reasons are there, so we can understand why it's so much challenging. And so what we are doing, we are trying to increase the donor base. We are trying to register more people, so we can register them, and then further in future they can become stem cell donors. Here we will see the donation process. I will say it's quite simple here. So we start always with filling a form. It's like a consent form where you provide your basic information, your name, your address, phone number, height, weight, plus you also give your consent here. So we do, whenever we register a person, we always register a person who is about 18 years, and maximum age is up to 50 years. So after filling the form, we also collect the swab. So collecting a swab is quite easy. We have these cotton buds, which a person can rub within the chick, inside the chick, and then
We keep this swab, we store it very safely, and then we put this data in the registry in the database. Yeah. So this is the process which we follow for registering a potential donor. Of course, when we register a donor, it means we capture his data, and here we have different donor data protection policies which we follow, and we ensure the data we are collecting is very much secure. So we always encrypt the data for whatever we collect, and we also comply with different regulations. So we follow IT Act of India, IT Act 2000. We also follow this General Data Protection Regulation of EU, GDPR. And there are also donor rights. Yeah, donors can withdraw, consent, or request data deletion anytime. So once a donor is registered, he can also withdraw depending on his interest and contact for registration. So data protection and data security is one of our key priorities. Whatever data we have, it's always safe and secure. So this is about the DKMS and what we do. Okay. Thank you, Mr. Hassan. It is truly inspiring to learn how DKMS enables access, hope, and healing. Now, before we call Kriti to the stage, let's watch her journey with blood cancer. ओके जब तक वीडियो चल रहा है तो मैं आपको एक प्रोसेस समझा देता हूँ. अगर किसी को ब्लड कैंसर है जिसको ट्रांसप्लांट की जरूरत है तो उसमें हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं. जैसा हम ये बीकेएमएस रजिस्ट्री है तो ट्रांसप्लांट क्या होता है, हम स्टेम सेल्स जो पूरा खून बना सकते हैं वो कलेक्ट करना चाहते हैं. किससे कर सकते हैं? एक्चुअली मैच सिबलिंग. एक्चुअली क्या है, हमारे ब्लड में कोई ऐसे प्रोटीन है जो कि पहचानते हैं हमारा ब्लड है कि दूसरे का ब्लड है. तो अगर भाई बहनों का ब्लड सेम है, ब्लड ग्रुप नॉर्मली हम ब्लड ग्रुप टेस्टिंग करते हैं, साथ में एक एचएलए टेस्ट भी होता है जिससे मैचिंग देखते हैं कि वो 10-12 प्रोटीन हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये दोनों भाई बहन में बराबर है कि नहीं. अगर वो मैचिंग आ जाता है जिसका चांस 25% है तो उसको हम बोलते हैं मैच्ड सिबलिंग डोनर. मतलब रिश्तेदारों में ही, सभी रिश्ते में ही ब्लड मिल गया. मैच्ड सिबलिंग मतलब भाई बहन डोनर. सबसे कॉमन ट्रांसप्लांट वही किया जाता है. वो मिलने का चांस 25% ही है. और जैसे जैसे अभी देख रहे हो फैमिली छोटी होती जा रही है, पहले 4 बच्चे थे, अभी तो कोई एक बच्चा करना चाहता है, तो ये सिबलिंग डोनर मिलना और मुश्किल हो रहा है. सो दूसरा उसके बाद ट्रांसप्लांट है वो है हाफ मैच. मतलब जो ये एचएलए नाम का प्रोटीन है वो मम्मी से भी आधा माँ से आया है, आधा पिताजी से आया है. तो हाफ मैच डोनर ट्रांसप्लांट भी किए जाने लगे. जिसपे हाफ मैच है उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा जो ट्रांसप्लांट के साइड इफेक्ट है वो ज्यादा होता है या फिर कुछ बार वो सक्सेसफुल नहीं होता. उसके बाद तीसरा जो प्रोसेस है वो है मैच्ड अनरिलेटेड डोनर, जिसके लिए हमने आज पूरा कैंपेन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है. उसको हम बोलते हैं मैच्ड अनरिलेटेड डोनर. मतलब दुनिया में हमारे एचएलए, हमारा बॉडी में जो एचएलए प्रोटीन है वैसे कुछ और लोग भी होंगे जिनका अगर एचएलए मैचिंग हमारे ब्लड से मिल जाते हैं तो हम उनसे स्टेम सेल लेके पेशेंट्स को दे सके. उसका चांस एक पेशेंट को उसके सेम एचएलए मिलने का चांस लाख में से 1 है. तो अगर हम पूरी रजिस्ट्री में डालते हैं, मान लीजिए हमारे पास 10 लाख का रजिस्ट्री है तो 1 लाख का रजिस्ट्री में चांस है 1%, मतलब एक को हर 1 लाख में वो एचएलए मैच मिलने का चांस है. तो वो चांस बहुत कम है. और बहुत कम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारे इंडिया में 150 करोड़ पॉपुलेशन है और टोटल रजिस्ट्री में पेशेंट जो डोनर है, जो हम ये आप बता रहे 2 लाख डीकेएमएस में, और भी जो रजिस्ट्री है टोटल डोनर हमारे पास 8 से 9 लाख ही है. तो 150 करोड़ पॉपुलेशन है, 9 लाख ही सिर्फ वॉलंटरी डोनर्स हैं. और हर साल कैंसर, जैसे आप इन्होंने बताया 2.7 लाख, 2.5 लाख के लगभग 3 लाख के लगभग पेशेंट्स को कैंसर है. तो अगर किसी को ट्रांसप्लांट की जरूरत है तो हम जैसे जैसे अपना रजिस्ट्री बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमको डोनर मिलने में सहायता ज्यादा होगी. बाहर की रजिस्ट्रीज भी होता है, यूएस की रजिस्ट्री अलग है, जर्मन का रजिस्ट्री है डीकेएमएस, जर्मनी में शुरू हुआ था, इंडिया में भी 2017 इंडिया में 2017-18 से इंडिया में भी एनरोलमेंट शुरू हुआ. 8 साल में 2 लाख पेशेंट ने अपना 2 लाख
लोगों ने अपना वॉलंटरी डोनेशन किया है HLA मैचिंग करने के लिए। सो बाहर की रजिस्ट्री से ब्लड मंगाना, बहुत मरीज है जिनका यूएस में मिल जाता है मैचिंग, जर्मनी में मिल जाता है, बट उसको वहां से स्टेम सेल कलेक्ट करके मंगाने में ही 30-35 लाख रुपए खर्च होता है, क्योंकि वहां पे ये छोटी छोटी प्रोसेस हमारे इंडिया से सस्ता नहीं होता। वहां पे स्टेम सेल कलेक्ट करने में 20 से 30 लाख रुपए लगता है। बट इंडिया में अगर ऐसा हो पाएगा तो इंडिया में हम कम रेट पे चीजें हो सकती है, वो प्रोसेस बहुत सस्ता है, पेशेंट्स को बहुत बहुत सहूलियत होगा। बाहर से जो ट्रांसप्लांट होते हैं वो एक ट्रांसप्लांट 50 लाख रुपए लगता है, जो कि अफोर्डेबल नहीं है पेशेंट्स के लिए। बट अगर इंडिया की रजिस्ट्री में कुछ मिलेगा तो हम शायद उसको 10 से 12 लाख रुपए तक में वो हो पाएगा, जो कि थोड़ा ज्यादा अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू 50 लाख रुपए। और जितना, और दूसरा जैसे आसिफ जी ने बताया कि एथेनिक ग्रुप, इंडिया वाले जैसे हमारे इंडिया के मरीज में स्टेम सेल मिलना यूएस में, जर्मनी में मिलने का चांस कम है। अपने ही एथेनिक ग्रुप, मतलब अपने ही आजू बाजू उसी एरिया में जो लोग रहते हैं उसमें मिलने का चांस ज्यादा है। इसलिए ही हर एथेनिक ग्रुप से अगर जैसे 300 या 3000 एथेनिक ग्रुप बताया, 3000 एथेनिक ग्रुप, तो जितना कम्युनिटी हमारी ही स्टेम सेल डोनेशन के लिए अपना रजिस्ट्री कराएगा, उतना ही मैच मिलने का चांस, जो HLA मैच हम बोल रहे हैं, मतलब फिट ब्लड जो कि बिल्कुल फिट रहे, इक्वली मैच रहे डोनर पेशेंट को चढ़ाने की, तो मिलने का चांस बढ़ेगा। इसलिए ये पूरा कैंपेन चल रहा है कि ये रजिस्ट्री कैसी बढ़ाई जाए, सो दैट जो भी पेशेंट है जिसको मैच सिबलिंग नहीं है, अगर 2 सिबलिंग है, फुल मैच नहीं मिल रहा है, हाफ मैच है लेकिन उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होता है, वो नहीं हो पा रहा है, तो जो ट्रांसप्लांट का ऑप्शन मैच अनरिलेटेड डोनर बचता है उसमें सक्सेस ज्यादा होता है।